तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीवीएम डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ये 12+12 स्लॉट वाला सीलिंग फैन वाइंडिंग करना। सो फ्रेंड्स, ये 12+12 स्लॉट वाला सीलिंग फैन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम वाइंडिंग करके। इसका वाइंडिंग डाटा क्या होगा फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम वायर में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको वाइंड करते हैं। तो किस तरह के इसको वाइंड करना है, किस तरह के इसमें डाई सेट करना है फ्रेंड्स, तो सारा कुछ प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फटाफट डाई सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहीं से थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ाऊँगा, इसलिए सॉरी। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें डाई सेट कर लिया। अब मैं मशीन को इसमें स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसमें पहली कॉइल इंस्टॉल करता है। मैं इसमें टर्न करेंगे फ्रेंड्स 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से। तो आपको इसे फेर के देख लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं पहली कॉइल इसमें इंस्टॉल हो गई है। मैंने इसमें सारी कोयलें डाल ली है, इसकी रनिंग कोयल। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप। तो बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग में डली हुई है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम में। तो इसमें यहाँ पे पीवीसी पेपर लगा के और यहाँ के कंप्लीट करके मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोयल पेपर भी लगा कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मैं कोयल चलो डाई सेट करता हूँ, कोयल डाल के आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाई सेट कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसमें टर्न डालूंगा फ्रेंड्स 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 350 टर्न। चलिए फ्रेंड्स, मशीन को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऑलमोस्ट कोयल डाल लिया। अब देख सकते हैं, अब इसमें 4 कोयल और बचे, तो वो भी आपको डाल के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी इसमें अब जो कोयल डलने वाली है फ्रेंड, 2 कोयल और बचेगी। इसके बाद इसमें टोटल 12 कोयल इंस्टॉल होती है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स मेरी ये दूसरी इसमें एक कोयल रो डलेगी इसके बाद, तो मेरी 11वीं कोयल इंस्टॉल हो रही है इसमें। फ्रेंड्स इसमें मैंने सारी कोयल इंस्टॉल कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग में। तो अब मैं इसमें यहाँ पे पेपर लगा के और इसका कनेक्शन कर कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने इसमें सारी कोयल डाल कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसका कनेक्शन करता हूँ। तो किस तरह का कनेक्शन करना है फ्रेंड्स, आपको राइट हैंड तरफ से फ्रेंड्स आपको रनिंग कोयल का तार लेना कि स्टार्टिंग कोयल का, तो उन दोनों को आपको ज्वाइंट कर देना है आपस में, और इसमें एक कलर का वायर आपको ज्वाइंट कर देना है। फ्रेंड्स दो तार फ्रेंड्स इसमें आपको दो एक कलर का वायर जोड़ देना है। और फ्रेंड्स इसमें स्लू लगा देनी है आपको। अब मैं फ्रेंड्स तारों को बाहर निकाल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने इसका कनेक्शन कर कंप्लीट कर लिया। अगर चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच।